हेलो एंड वेलकम बैक टू अनिकेत क्रिएटिविटी। मैं हूं अनिकेत और आज हम हमारे गणेश जी का सेकंड पार्ट यानी कि उनका कलरिंग का पार्ट बनाएंगे। मैंने फर्स्ट पार्ट ये मूर्ति कैसे बनाए उसका पूरा डिटेल वीडियो चैनल पे ऑलरेडी पब्लिश है, जिन्होंने नहीं देखा वो वहां जाके देख सकते हैं। तो कलरिंग के लिए हमें जो मटेरियल लगेगा वो हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिए है पोस्टर कलर्स, क्योंकि ये इको फ्रेंडली कलर्स होते हैं और हमारी गणेश जी की मूर्ति भी पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। और मैंने यहाँ कुछ पेंट ब्रश भी लिए हैं और वाटर कलर्स भी लिए, इसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं और ये भी पूरी तरह इको फ्रेंडली कलर्स है। तो अब हम गणपति को पहले व्हाइट पेंट कर देते हैं। व्हाइट पेंट करने के बाद मैंने इसे अच्छे से सुखा लिया और अब हम इस पे कलरिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ स्किन कलर करने वाला हूँ। तो अब हमें धूतल को शैडो इफेक्ट देना है। तो शैडो इफेक्ट के लिए मैं यहाँ वॉयलेट कलर का यूज कर रहा हूँ। गणपति की स्किन को शेड देने के लिए हमें यहाँ क्रीम कलर पे ऑरेंज या फिर पिंक कलर मिक्स करना है।
तो अब मैं गोल्डन में थोड़ा रेड कलर ऐड करके आसन को पेंट करूँगा।
से इसे गोल्डन कलर करता हूँ। तो अब हमारे पापा कलर करके रेडी है। आपको ये मूर्ति कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। आज का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और बोलो गणपति बाप्पा मोरया।